Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter 15 sampling distribution is under discussion today, lecture number 17, and the topic is sampling distribution of difference between two sample proportions P1 hat minus P2 hat. In this lecture, students, I will discuss only an important exercise question for difference between two sample proportions. Now, students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic. Sampling distribution of difference between two sample proportions with an important exercise question. In the contents of this lectures, I am going to discuss an important exercise question by sampling without replacement using sample sizes n1 equal to 2 and n2 equal to 2 for sampling distribution of difference between two sample proportions P1 hat and P2 hat. Now students, I am starting an exercise question for sampling distribution of difference between two sample proportions P1 hat minus P2 hat. The statement of this question: let P1 hat denote the proportions of even numbers in a random sample of size n1 equal to 2 drawn without replacement from a population consisting of values 4, 6, 9. Similarly, let P2 hat denote the proportion of even numbers in a random sample of size n2 equal to 2 drawn without replacement from another population consisting of values 2, 3 and 5. Now students, here we have two population values and each have sizes 2, and draw all possible samples of size 2 by sampling without replacement and using proportions of even numbers. In the first step, find all possible differences between two sample proportions P1 hat minus P2 hat. In the second part, prepare the sampling distribution of difference between two sample proportions P1 hat minus P2 hat and also compute its mean and variance. In the third part, find population proportions of the population 1 values and population 2 values. In the fourth part, verify the results using verification formulas. And first verification is that mean of P1 hat minus P2 hat is always equal to difference between two population proportions P1 minus P2, and the variance of P1 hat minus P2 hat, which is denoted by sigma square, P1 hat minus P2 hat equal to P1 Q1 over N1 into N1 minus N1 over N1 minus 1 plus sign, and for the second population P2 Q2 over N2 into N2 minus N2 over N2 minus 1. These are the two verifications for sampling distribution of difference between two sample proportions by sampling without replacement. In the first phase, consider the population 1 values and draw a sample of size 2 by sampling without replacement from the population values x1, 4, 6 and 9, and the population size is capital N1 equal to 3 and sample size N1 equal to 2. Total samples formulas is being used by sampling without replacement N1 C small n1. Our population size is 3 and small n1 equal to 2. 3C2 answer is 3. Here students, we draw three samples by sampling without replacement from the population values 4, 6, 9. First we write the serial number 1, 2, 3 and second column is the samples. और samples students आपने draw करने हैं. First आपने 4 को click करना है और उसके साथ next two values के साथ samples draw करने हैं size 2 के 4, 6 and 4, 9. Then आपने 4 को लीव कर देना है और 6 को क्लिक करें और 6 के साथ नेक्स्ट सैंपल्स ड्रॉ करें 9. तो here we have three possible samples by sampling without replacement of size 2. On the right hand side, similarly we have the three values for population 2, 2, 3 and 5. Our population size n2 equal to 3 and sample size small n2 equal to 2. Total samples formula use करेंगे by sampling without replacement n2cn small n2 3c2, and here also draw three samples for the population values 2, 3 and 5. First 2 को क्लिक करें और 2 से आप नेक्स्ट टू वैल्यूज के साथ साइज 2 का सैंपल्स ड्रॉ करें 2, 3 and 2, 5. देन 2 को क्रॉस कर दें और सेकंड थर्ड को 3 को क्लिक करें और 3 के साथ सैंपल ड्रॉ करें 3, 5. Both the populations have consider the
proportions of even numbers in each samples. तो फर्स्ट पे आपने सैम्पल्स के अंदर जो है वो इवन नंबर्स की प्रोपोर्शंस को राइट करना है। तो थर्ड कॉलम आपका P1 हेड का है और इसमें आपने फाइंड करने हैं इवन नंबर्स। तो 4 6 हैव 2 इवन नंबर्स एंड टोटल नंबर्स आर आल्सो 2, तो प्रोपोर्शन इज 2/2। इन द नेक्स्ट सैम्पल 1/2, 4 is only one even number, and 6 9 is here also the proportion of even number is 1/2। and for the second populations P2 head, तो इसमें भी हम लोग कंसिडर करेंगे इवन नंबर्स की प्रोपोर्शंस को इन ईच सैम्पल्स। तो 2 3 में एक इवन नंबर है 2, तो आंसर आपके पास प्रोपोर्शंस का आंसर होगा 1/2। नेक्स्ट में 1/2 और लास्ट सैम्पल 3 5 और देयर आर नो इवन नंबर्स इन 3 and 5, सो प्रोपोर्शन इज 0/2। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्रोपोर्शंस को फाइंड करना है इन ईच सैम्पल्स फॉर द बोथ पॉपुलेशंस, और देन हम लोग जो है इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो इनके डिफरेंसेस को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दीज टू प्रोपोर्शंस फॉर P1 head and P2 head। Now in this step, making differences between two sample proportions P1 head minus P2 head as found in step 1. P1 head is the proportion of even numbers in each sample for the population 1, and P2 head is the proportion of even numbers in each sample for the population 2. First students, we write the proportions of even numbers for the first population is इन कॉलम P1 हेड को मैंने कॉलम में राइट किया है 2/2, 1/2 एंड 1/2, एंड P2 हेड की प्रोपोर्शंस को एज इट इज राइट कर दें इन रो 1/2, 1/2 एंड 0/2। 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड 0/2 इक्वल टू कंसिडर एज 0। और इसको स्टूडेंट्स 1/1 हम लोग जो है वो माइनस करेंगे। तो फर्स्ट आपने प्रोपोर्शंस जो है P1 हेड की, इसको 1/1 आपने माइनस करना है सेकंड पॉपुलेशन की प्रोपोर्शंस से P2 हेड से। तो फर्स्ट 1 को 1 माइनस करें 1/2 से, आंसर इज 1/2। सेकंड आपने 1 को अगेन माइनस करें 1/2 से, तो आंसर इज 1/2। 1 minus 0 आंसर इज 1। सिमिलरली आपने क्लिक करना है सेकंड प्रोपोर्शंस 1/2 फॉर P1 हेड के लिए, और इसको 1/1 आपने P2 हेड की प्रोपोर्शंस से माइनस करना है। तो वो सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंस ऑफ P1 head minus P2 head। तो 1/2 minus 1/2 0, 1/2 minus 1/2 0, and 1/2 minus 0 equal to 1/2। और थर्ड पे आपने इसको क्लिक करना है 1/2 और इसको अगेन आपने माइनस करना है 1/2 से, आंसर 0। 1/2 अगेन इसको नेक्स्ट प्रोपोर्शन से माइनस करें 1/2 minus 1/2 0, or next 1/2 minus 0 equal to 1/2। In this way students, you have to find the differences of the proportions for both the samples of size n1 n2 के लिए हमने proportions of even numbers को calculate किया था, उनकी हमने differences को calculate कर लिया। और now students in the next step हम लोग इन differences को utilize करेंगे और then फिर उसकी sampling distributions को prepare करेंगे। Now in this step, prepare the sampling distribution of difference between two sample proportions P1 head minus P2 head, as we have already been find in step 1, and differences of the proportions are 0, 1/2 and 1, and we make the frequency distribution, and 4 times appear 0 difference and 4 times appear difference 1/2 which is 0.5, and 1 time appear difference 1। और टोटल आपके पास 9 डिफरेंस थे P1 हेड माइनस P2 हेड के लिए। तो देन स्टूडेंट्स इन थर्ड कॉलम वी प्रिपेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस। और फर्स्ट आपके पास जो है वो आपका इसने आप फ्रीक्वेंसी को 4 पे 4 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंस 0, 4/9, एंड next is also 4/9 and 1/9, this is for the difference of proportions 1/9। और टोटल आपके पास समेशन f of p head P1 head minus P2 head is equal to 1, and two necessary columns are prepared for mean and variance। तो फर्स्ट कॉलम को स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम से f of P1 head minus P2 head के साथ। तो फर्स्ट इज 0, नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 2/9, and 1 multiplied by 1, answer is 1/9, and then taking its sum 2 plus 1 equal to 3/9। तो इस कॉलम का सम स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट किया 3/9, एंड नेक्स्ट कॉलम इज P1 head minus P2 head का स्क्वायर इनटू f of P1 head minus P2 head। और इसमें आप लोग जो है वो फर्स्ट कॉलम का
स्केयर लेके इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का स्केयर 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 से, आंसर इज 0। 9.5 का स्केयर एंड मल्टीप्लाई बाय 4/9, आंसर इज 1/9। और नेक्स्ट आपके पास 1 का स्केयर 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से, तो आंसर इज 1/9। और देन स्टूडेंट्स आपने इस कॉलम का सम जनरेट करना है और ये आपके पास आ जाएगा 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 2/9। तो स्टूडेंट्स इनके सम्स को हम लोग यूज करेंगे मीन एंड वेरिएंस के फॉर्मूलाज के लिए फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सैम्पल प्रोपोर्शंस। Now we have to find the values of the mean and variance for a sampling distribution of P1 hat minus P2 hat using obtained results. First we write the formula for mean. Mu P1 hat minus P2 hat is also equal to expected value of P1 hat minus P2 hat और इसको open करेंगे with summation sign P1 hat minus P2 hat जो कि expected में आपने write किया है P1 hat minus P2 hat और इसको अपनी relative frequency f of P1 hat minus P2 hat से multiply कर देंगे और इसका result already हम लोग जो है वो find कर चुके हैं in previous step which is 1/3। और वेरिएंस के लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट का स्क्वायर फाइंड करेंगे और इसको ओपन करेंगे विद समेशन साइन, राइट करेंगे P1 हैट माइनस P2 हैट का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी f ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट से और इसका रिजल्ट राइट साइड पे मैंने अगेन शो कर दिया विच इज 2/9। इसको राइट कर दें स्टूडेंट्स और ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 हैट माइनस P2 हैट का स्क्वायर जो है वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। देन स्टूडेंट्स आप लोग राइट करेंगे वेरिएंस का फार्मूला सिग्मा स्क्वायर P1 hat minus P2 hat which is also equal to VAR variance of P1 hat minus P2 hat. It is equal to expected value of P1 hat minus P2 hat square minus sign और ब्रैकेट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P1 hat minus P2 hat का होल स्क्वायर और इन दोनों के रिजल्ट्स 2/9 और 1/3 जो है हम उसको पुट कर देंगे, 1/3 का स्क्वायर यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा variance of P1 hat minus P2 hat equal to 1/9. Now students, in this way using these formulas to calculate the values of the mean and variance for sampling distribution of P1 hat minus P2 hat. Now in the fourth step we have to calculate the population proportions for the population 1 and population 2. Consider the population 1 values 4, 6, 9 and total population size is 3 and sample size is 2. Here we also taking the proportion of even numbers which is denoted by P1 और P1 formula is x capital X1 over N1 और आप इसमें consider करेंगे कितनी how many values are even in these population values 4 and 6 there are the two numbers 4 and 6 और total numbers are 3 तो P1 equal to 2/3। ये आपके पास प्रोपोर्शंस आ जाएगी इवन नंबर्स की इन फर्स्ट पॉपुलेशन और इसके अगेंस्ट प्रोपोर्शन इज डिनोटेड बाय Q1 और फॉर्मूला इज 1 माइनस P1। P1 की वैल्यू पुट कर दें 2/3 और इसमें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगेंस्ट प्रोपोर्शंस P1 के अगेंस्ट जो प्रोपोर्शंस होगी विच इज Q1 इक्वल टू 1/3। Similarly for the population 2 and values are 2, 3 and 5 and there are only one even number and which is denoted by P2 or answer is P2 equal to x2 over capital N2. This is the formula for population proportions P2, answer is 1/3 और इसके against proportions students calculate करेंगे which is Q2, formula is Q2 equal to 1 minus P2 और P2 की वैल्यू पुट कर दे 1/3 और 1 minus 1/3 and value of Q2 equal to 2/3. In this step students only we have to calculate the population proportions and its against proportions using population values 1 and 2. Now in the last step using verification formulas for sampling without replacement for mean and variance using obtained results. First students write first verifications for mean mu P1 hat minus P2 hat equal to P1 minus P2 और हम लोग यूज करेंगे अपने रिजल्ट्स को और मीन ऑफ P1 hat minus P2 hat is calculated from sampling distribution P equal to 1/3 उसको यूज करेंगे लेफ्ट साइड पे और P1 P2 are the proportions of even numbers in each populations which is 2/3 and 1/3 और इनका डिफरेंस यूज करेंगे और ये आपके पास जो है वो इक्वल टू 1/3 है which is equal to the mean of P1 hat minus P2. First verification has been proved and second verifications for variance राइट करेंगे इसका फार्मूला
sigma square p1 hat minus p2 hat is equal to p1 q1 over n1 into capital N1 minus n1 over n1 minus 1 plus sign, same for the second population p2 q2 over n2 और into कैपिटल N2 माइनस N2 ओवर N2 माइनस 1 और स्टूडेंट्स राइट साइड के रिजल्ट्स को यूज करेंगे और अपना फाइंड करेंगे इसकी वेरिफिकेशंस को। तो आप पुट कर दें वैल्यूज को P1 Q1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/3 और ओवर 2 और FPC फैक्टर में वैल्यूज पुट कर दें कैपिटल N1 इज 3 एंड सैंपल साइज इज 2 3 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 1 और सेकेंड पॉपुलेशंस की वैल्यूज P2 Q2 1/3 इंटू 2/3 ओवर 2 और कैपिटल N2 जो है इज आल्सो 3 सैंपल साइज इज आल्सो 2 3 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 1 पूरे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें आंसर इज 1/9 और ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 hat minus P2 hat के वेरिएंस के साथ। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यूजिंग दीज रिजल्ट्स यू कैन प्रूव द वेरिफिकेशंस। Now students, in this lecture an important exercise question for sampling distribution of difference between two population proportions has been discussed and in 5 steps we complete the questions exercise question and prove the results using verification formulas। इंशाल्लाह तो students next lecture में मुलाकात होगी next topic के साथ। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके students, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।